A truck perched on a terrace. A Maruti 800 sitting on top of a Tata Sumo. Terrace after terrace, covered with vehicle doors and bonnets. Greasy machine parts encroach on the roads and invisible pavements. The groaning of the JCB, which moves around the engines, and the clunk of the parts when they are thrown at each other one after the other, are the sensual identifications of the vehicular scrap market, Mayapuri. Vehicles bought through retail or from auctions travel to be dismantled in Mayapuri's muddy lanes. A truck can be dismantled in an hour and a half, and a car will take lesser. The parts to be resold are extracted and are moved to second-hand shops, and the rest is left for metal scrap dealers. यहाँ पे सारी स्क्रैप कार्स आती हैं। यहाँ आने के बाद उनके पार्ट्स अलग अलग बिकते हैं। पार्ट्स नहीं बिकते हैं तो यह पूरे स्क्रैप हो जाते हैं। सारे पार्ट्स खोल दिए जाते हैं और उसके बाद इंजन गियर अगर खुलने वाला है, स्क्रैप होने वाला है, तो उसके साथ साथ टायर्स खोलते हैं, उसके गाड़ी के शीशे वगैरह सारे ब्रेक करते हैं, बम्पर्स वगैरह खोलते हैं, सीटें खोलते हैं। देन उसके बाद उसके नीचे की वायरिंग होती है सारी, वो सब वायरिंग निकल जाती है। और अगर बाई चांस गाड़ी के पार्ट्स बिकते हैं, बॉडी पार्ट्स होते हैं, तो हम उन्हें खोलते हैं। अगर नहीं बिकते हैं तो वो बॉडी पार्ट्स जो है, पूरी की पूरी बॉडी जो हो जाती है वो अलग से वेट होती है। और वेट करने के बाद जो मार्केट में उसका वेट चल रहा होता है, एल्युमिनियम का या फिर आयरन का या फिर वो बॉडी का, उस रेट के हिसाब से हम उसको स्क्रैप कर देते हैं और यहाँ पे क्लियर हो जाती है गाड़ी। The process is such that after a vehicle is dismantled, shopkeepers buy the parts that they deal in. The seats, rubber and plastics are gathered by smaller scrap dealers. Other than that, scrap is turned into medium-sized cubes using a machine. The last bit of scavenging is done by women and children, who use magnets to gather the little metal that falls down on the roads and burn the plastic and wires that are collected at the market for their metal contents. Mayapuri is India's largest scrap market. The complexities seen in its streets has characterized the market, explains a shopkeeper. 1975 में मोतिया खान से हमें यहाँ शिफ्ट किया गया था और यहाँ पे हमें सिर्फ खाली जगह दी गई थी, प्लाट काटे थे, इस पे कुछ भी नहीं था। पहले ऑक्शन हुआ करते थे, आज भी ऑक्शन होते हैं, जैसे आर्मी करती है, डीटीसी करती है, रोडवेज वाले करते हैं, और डिपार्टमेंट है, एमसीडी वगैरह जितने भी डिपार्टमेंट है वो ऑक्शन करते थे और उस ऑक्शन से हम सामान लेकर, गाड़ियां लेकर यहाँ के डिसमेंटल करते हैं। उसमें कारें भी आती हैं, बसेस भी आती हैं, ट्रक्स भी आते हैं, मशीनरी पार्ट्स भी आता है, बुलडोजर्स वगैरह, बड़ी बड़ी जेसीबी वगैरह, बड़ी बड़ी मशीनरी क्रेन्स वगैरह आती हैं। तो उसमें उस तकरीबन उस यहाँ पे सारी चीजें डिसमेंटल ही होती हैं, मैक्सिमम 90% डिसमेंटल होती है और उनके पार्ट्स जो हैं वो फिर सारी इंडिया में अलग अलग जगहों पे लोग खरीद के लेके जाते हैं। ये वो जगह है जहाँ पे किसी भी गाड़ी की, किसी भी मशीनरी की, किसी स्कूटर, किसी मोटरसाइकिल की आखिरी यात्रा होती है, ये शमशान और उनका आखिरी क्रियाक्रम यही होता है उसका। Mayapuri's everyday recycling processes are not as evolved as the international scrap recycling market. International recycling markets are well equipped and designed to sustain a complex system.